Despite heavy rainfall, we witnessed great enthusiasm among the students who participated in Independence Day celebration 2024. I have with me some students of Public English Medium Bijbara. As usual, they rocked today and they did a wonderful presentation here. I have with me Sabah Farooq. First of all, we will get a message regarding the Independence Day. Sabah, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और साथ साथ क्या मैसेज रहेगी आपकी? I'm Nashina Farooq from Public School English Medium Ishwara, and I'm truly enthusiastic while participating in this event. Actually, today's event has a marvelous effect on every student as well as the executive and all the arrangements. Despite of the rainfall, the zeal and the zest among the people is not wasted. Truly, we are celebrating the Independence Day with full remarking the struggle of our nation and the patriotism we hold for that. You lauded the arrangements of administration. Why we are celebrating Independence Day? Independence Day is a very great day, but more than a gray on the calendar, it's an opportunity for all of us to brace the struggle our nation has faced. Till the last colonial rule till now on the stage we have become the largest democracy in the world. It's the struggle of India that India has faced, and with its patriotism of its people, with the struggle of common people as well as the freedom fighters. What will be your special message to the common people so that they will keep the patriotism alive? The common message among the people is that we must also promote our India, as India is our strength. The diversity we are having in our India, the cultural diversity or the language diversity is our strength. So we must make our differences our strength, as there are a lot of issues with our differences, maybe that be the differences of religion or the custom or the culture. We have to make them our strength so that India can be successful in every field. Sabah, you are breaking the stereotypes. Day by day, you are growing, and every time you participating in such a mega programs. Do you find some change after abrogation of Article 370? Yeah, there are a lot of change. I think people are getting more closer to the Indian nation, and they are feeling that the Indian patriotism is quite great. Maybe that with the administration or the executives who are governing us. She was Sabah Farooq from Public English Medium Bijbara. मेरे साथ एक और तालिब इल्म बात करने के लिए मौजूद है. इनसे भी बात करेंगे और यौम आज़ादी के दिन पर इनसे पैगाम लेंगे. क्या खुसूसी मैसेज आप देना चाहोगे? सर, जो है इंडिपेंडेंस डे है, ये हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पर ब्रिटिश रूल थे वो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जुल्म किए, इस इंडिया पर कब्जा किया था. तो हमारे जो लोग हैं और ये बैरियर्स हमारे थे, पुलिस, आर्मी, उन्होंने इसके खिलाफ स्ट्रगल किया. और जब यहाँ बहुत सारे आर्मी भी शहीद हो गए, बहुत सारे पीपल भी शहीद हो गए, और इस वजह से हम जब इंडिया आजाद हो गया, इसलिए हम इस इंडिपेंडेंस डे को आज बना रहे हैं. तो क्या खुसूसी पैगाम लोगों के लिए रहेगा? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें अच्छे से ये इंडिपेंडेंस डे बनाना चाहिए, क्योंकि इस मौके पर बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी. तो बारिश की वजह से थोड़ी खलल हो चुकी है, फिर भी कैसा माहौल लग रहा है आपको? सर, बारिश की वजह से तो बहुत खलल हुई है यहाँ पर, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है यहाँ पर बारिश से. चलिए, ये कुछ तालाब थे जिनसे हमने बात की. इनका यही कहना है कि बारिश की वजह से अगर से खलल हो चुकी है, लेकिन फिर भी जोशो जज्बे में कोई भी कमी नहीं आ रही है. देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट.